What is up guys? सबसे पहले a huge thanks to developers who managed to bring us the Oxygen OS 10, or you may say OnePlus 7 Oxygen OS 10 for our beloved Poker Fun. And this Oxygen OS also goes by the name Utopia, and this is bugless. So Dave, you guys have unlocked an achievement and that's really great. And guys, this video includes the installation process of this ROM for your Poker Fun. We will also have a look at the add-ons and obviously on the ROM itself. And if you are new to this channel, do not forget to hit that subscribe button and drop a like. Let's dive into the video now. Okay guys, so let's start with installation. But guys, install करने से पहले make sure that you have backed up all of your data just in case if anything goes wrong you can restore. And guys, install करने से पहले we need to check कि आपका device encrypted है या फिर नहीं. So to check if your device is encrypted or not, go to settings and scroll down, go to security. Here you will see an option which says encryption and credentials. As you can see, it says phone not encrypted. And that means कि मेरा डेटा यहाँ पे encrypted नहीं है. एंड ऑक्सीजन ओएस इंस्टॉल करने से पहले मुझे यहाँ पे अपना डेटा फॉर्मेट करने की ज़रूरत भी नहीं है. बट अगर ये आपके केस में दिखाता है फ़ोन encrypted, देन आपको अपना सारा डेटा फॉर्मेट करना पड़ेगा या आपको अपना फ़ोन पूरा फैक्ट्री डाटा रीसेट करना पड़ेगा ऑक्सीजन ओएस इंस्टॉल करने से पहले. एंड यप, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप. So guys, do not ignore this. Make sure that you have downloaded all of these files in order to install Oxygen OS. So guys, ये TWRP basically डिज़ाइन की गई है सिर्फ Oxygen OS के लिए. एंड इस TWRP को यूज़ करना मैंडेटरी है इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस में. सो अगर आप पहले से ये रिकवरी यूज़ कर रहे हैं दैन दैट्स वेल एंड गुड. बट अगर आप कोई और रिकवरी यूज़ कर रहे हैं एंड आपको इस रिकवरी पे स्विच करना है, आई विल बी शोइंग यू हाउ टू डू दैट इन द इंस्टॉलेशन प्रोसेस. सो व्हेन यू आर रेडी, हिट रीबूट टू रिकवरी. So first of all, we need to flash TWRP recovery. So go to install and navigate to all of your files. So as you can see that कि मैंने वहाँ पे एक TWRP की इमेज फाइल रखी थी, एक TWRP की zip फाइल रखी थी. क्योंकि अगर zip फाइल फ्लैश नहीं हो then we will be flashing .image file. So right now let's try to flash TWRP.zip file. तो guys, ये फिक्स नहीं है कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो भी सकती है zip फाइल एंड नहीं भी हो सकती. एंड अगर zip फाइल इंस्टॉल नहीं होती then you will have to install .image file. So right now we are going to install .zip file. This is the TWRP. So simply select it and swipe to confirm flash. As you can see that कि यहाँ पे recovery install हो गई and it says reboot recovery now. So let's go back and go to reboot and press recovery and do not install. We have successfully booted into this recovery. Now it's time to begin the real installation process. So first of all guys, go to wipe and go to advanced wipe. Select Delphi card cache, system, vendor and data. Do not select internal storage. अगर आपका फ़ोन encrypted नहीं है then you don't have to select internal storage. But अगर आपका फ़ोन encrypted है then you will have to format data. So मेरे यहाँ पे फ़ोन encrypted नहीं है, then I will simply swipe to wipe. So यहाँ पे हमने सब कुछ wipe कर लिया except internal storage because my phone wasn't encrypted. It's time to go to install. एंड गाइज, नेविगेट करना आपको अपनी सारी फाइल्स में दैट विल बी रिक्वायर्ड वाइल इंस्टॉलिंग दी ऑक्सीजन ओएस. हमें ये सारी फाइल्स इस ऑर्डर में इंस्टॉल करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट फर्मवेयर, देन प्रेस ऐड मोर जिप्स, देन यू हैव टू सेलेक्ट वेंडर, ऐड मोर जिप्स, देन यू हैव टू सेलेक्ट सिस्टम and swipe to confirm flash. Thankfully all of the files have been successfully flashed. It's time to wipe cache Dalvik and reboot system. Do not install. Here you can see the boot animation of Oxygen OS. So guys, फ़ोन यहाँ पे सक्सेसफुली बूट हो चुका है एंड आई थिंक इट टुक 3 to 4 minutes टू बूट अप. तो ये यहाँ पे रोम पूरी सेट हो चुकी है एंड यू गेट दीज एप्स आउट ऑफ द बॉक्स एक्सेप्ट टेलीग्राम मैंने यहाँ पे अभी अलग से इंस्टॉल किया है. And this one is basically the live wallpaper, so I will show you. So yeah, as you can see that this one is live wallpaper. And अभी आपने face unlock देखा होगा. So guys, face unlock भी काफ़ी ज़्यादा fast है. Even though it doesn't use the IR camera, I will show you.
So right now मैंने यहाँ पे अभी अपना फ़ोन लॉक कर दिया है, and when I tap on power button, so as you can see that it doesn't use any IR camera, it uses the front camera, but काफ़ी ज़्यादा fast है and it easily unlocks the phone in a single go. So yeah, that's really great to see. And guys, fingerprint भी यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है, so you have no issues with fingerprint as well. And guys, if we go to the settings and about phone, you can see that it is based on Android version 10. You can tap on it and here you can see that it comes with the security patch of May 1 2020, and it has the Google Play system update of 2019-10. In my notification it also shows that Google Play system update is ready to install. Yep, I will do that later. It comes with the OxygenOS optimized kernel, even though you can install a stock kernel with Better Touch or GNOS kernel if you want to. The link is in the Telegram post. And in customizations you have the option to select the themes. Even this horizon light is also working fine. Here you have the option of Dolby Atmos, so you can see that currently it is set on dynamic. अभी अपने earphones detach कर लिए हैं. And guys, in this build you have volume panel on the right side, as you can see that, and it's working absolutely fine, no issues with this. And यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे automatic media caption भी enabled हो चुका है. So yep, that's pretty cool. And to enable the sound options, or you may say sound tiles, you'll have to go into quick settings and tap on this edit icon, swipe to right and drag and drop this IndiaNet sound tiles into your quick settings. I have dropped it here, and enable allow do not disturb. So basically now you can switch your sound profiles. Like currently it is set on ring, you can tap on it and now it is on vibrate, now it is on silent. So yeah, that's pretty cool, and that sound tile, it's working super fine. एंड गाइस, रोम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मैंने कोई भी अभी तक इसमें लैग या कोई भी स्टटर कहीं पे भी नहीं देखा. ऑल ऑफ दीज एनिमेशंस आर सुपर स्मूथ, स्पेशली दिस वन. तो ये एनिमेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगी. सो गाइस, एंड्रॉइड सेटअप यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर रहा था, सो यू विल हैव टू गो टू द एंड्रॉइड सेटअप इन्फो एंड प्रेस डिसेबल. आई एम गोइंग टू डू दैट. एज यू कैन सी दैट आई हैव डिसेबल्ड एंड्रॉइड सेटअप. बट गाइज, हमने OxygenOS 10 अभी तक रूट नहीं किया Magisk से. So guys, after setting the device, you can install Magisk to get root access. Make sure to install the latest Magisk. And guys, मैंने यहाँ पे अपने सारे apps migrate से restore कर लिए and says finished, no error. So you can restore all of your apps using migrate. Now it's time to install add-ons over the OxygenOS, which also goes by the name Utopia. So let's start with the Dolby Utopia. So to install Dolby Utopia, you have to rename the file. Just remove this .jar and you are good to go. Press OK. So after renaming the file, you can see कि अब ये एक APK form में आ चुका है. Simply click on it and press install. So यहाँ पर हमारा Dolby Atmos install हो चुका है and it says Utopia of Can. And it's working super fine, especially with OnePlus Bullets Wireless Z, because I use it as my default. I use it as my primary earphones, and it's super. Next add-on, we have new Volt icons, OxygenOS 10, and this one is basically Magisk Zip. This is the new Volt icon. Earlier we had different icon without flashing this mode. So yeah, so this is the add-on which replaces your Volt icon. It shows oof gang even in internal.